and your complete concentration is required. This accounting equation is very important from the angle of your first unit test. Okay, in some schools or colleges, they are even asking the same question based on this, okay, in the term and examination. But I am going to explain it thoroughly, and your complete attention is required. We are going to solve some sums on this, some examples on this. Okay, so let us begin again. Assets means the properties of the business, like a land and building, plant and machinery, furniture. Okay, then cash in hand, cash at bank. All these are called as our assets. Even stock of goods. Debtors का मतलब क्या होता है? Our customers to whom we are selling on credit basis, जिनको हमने क्रेडिट के ऊपर माल बेचा है. The goods are sold on credit basis. They are called as the debtors, our customers, from whom amount is receivable. So these are examples: cash, bank, land and building, machinery, furniture, goods, debtors. There are other examples also: computer, printer, okay, like this, or livestock. Now, what is the rule for this? Comes in add. मतलब अगर हमने एसेट परचेज किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. एंड गोज आउट मतलब सेल कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. सो एसेट कम्स इन ऐड एंड एसेट गोज आउट लेस. ओके, आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल फॉर दिस. फॉर एग्जांपल, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश. हमने फर्नीचर सेल किया है कैश के ऊपर. फर्नीचर इज सोल्ड फॉर कैश. In this particular case, okay, आपको क्या करना है? ये पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं. Okay, when furniture is sold for cash, less because furniture is sold. Okay, but उसके बदले में क्या अंदर आ गया? Cash comes in, furniture goes out, cash comes in. तो हमको ऐड करना है कैश को और लेस करना है फर्नीचर के लिए. So this is the applicable rule. Now liabilities. Liabilities का मतलब क्या होता है? The amount which is payable by business to outsiders. Okay, जैसे हमारे suppliers है, हमारे employees है, जिनको हमको पेमेंट करना है, तो actually that is only called as a liabilities. Like a creditors, outstanding expenses, pre-received income, that is income received in advance, जिसके लिए काम करना अभी बाकी है हमारा. Okay, so these are called as our liabilities. Okay, तो creditors का मतलब क्या होता है? मान के चलो आपने माल परचेज किया, okay, क्रेडिट बेसिस के ऊपर, तो वो जो पार्टी है जिससे आपने माल परचेज किया है उसको आज नहीं तो कल पैसा तो देना पड़ेगा ना. Okay, so here goods are purchased, so that is becoming your asset. So goods are purchased, add. Okay, but that is also becoming our liability because that is purchase on credit. So add in liability, increase in the liability, add in the liability, but decrease in the liability, less from liability. For example, you are doing the payment to creditors. आपने creditors को कुछ payment कर दिया. Okay, तो यहाँ पे liabilities में आपको less करना पड़ेगा और asset में भी less ही करना पड़ेगा. Why? Because that much cash is paid. उतना पेमेंट हम कर चुके हैं. ओके, देन कैपिटल का मतलब क्या होता है? दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स, ओके, काइंडली लिसन टू मी. यश, देन साहिल आल्सो एंड वंशिका आल्सो. ओके, लिसन टू मी. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ओके, मतलब हम लोग जब बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस चालू करते वक्त उस बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा तो डालना पड़ेगा. विदाउट एक्चुअली मनी वी कैन नॉट बिगिन विद द बिजनेस. ओके, सो एक्चुअली द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय बिजनेसमैन इज ओनली कॉल्ड एज कैपिटल. ओके, नाउ कैपिटल इज देयर. तो कैपिटल के बारे में एग्जांपल क्या है? एडिशनल कैपिटल. बिजनेस में और कैपिटल हमने लाया, एडिशनल कैपिटल. Drawings. What do you mean by drawings? Drawings is exactly opposite to capital.
the amount, okay, in cash or in the form of goods. Goods का मतलब होता है माल, okay, which is taken for personal use, individual purpose, personal use, domestic purpose. That is only called as a drawings. Okay. Then incomes and gains. Whenever we are selling the goods, we are getting income. Okay. Gains are there, discount received. So incomes क्या क्या होते हैं? Sales, commission received, interest received, rent received, discount received. These are the examples of your incomes. Expenses and losses. Expenses and losses में क्या आएगा? What is coming in the expenses and losses? Okay. See, as a businessman, we are doing the payment of salaries to our employees. हमारे एम्प्लॉयज को हम पेमेंट देते हैं, महीने का सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, फिर कैरेज का खर्चा होता है, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, कुली चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके, then telephone charges, mobile bill, all these are called as the expenses. And then losses are like a loss by fire. ओके, हमारे गोडाउन में आग लगी तो लॉस तो होने ही वाला है. ओके, सो लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, मतलब ड्यूरिंग ट्रांजिट एक्चुअली हमारा ट्रक पलटी हो गया. ओके, तो उसका भी तो लॉस हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज द लॉस. व्हाट इज द रूल फॉर दिस? इनकम्स एंड गेन्स ऐड. इनकम एंड गेन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना है. एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लेस. ओके, so in this way you are supposed to understand the rules for accounting equation. शायद आपने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, because I am going to upload the lecture in app. हर कोई अपना रोज का रोज लेक्चर हमारा ऐप में हम लोग अपलोड करने ही वाले हैं. ओके, लेकिन मेरी ये विनती है आपको कि आपको लिखना चाहिए मेरे साथ. You should write with me. Now here in after, immediately we are going to continue with the solution of the problems. Okay. पहले तो मैं illustration से समझाऊंगा. Okay, illustration से समझाऊंगा, और जो उसका एक्सरसाइज है that will be given to you as a assignment. Okay, assignment के तौर पे आपको मिलने वाला है. ऑलराइट, लेकिन उसके लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा, जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ. ओके, आपने सब लिखा ही है. If it is written by you, you can show me the reaction. Yes sir. Okay, या तो आप बोल सकते हो सर हम लिख चुके हैं, ऐसा बोल सकते हो. So I can wipe it out. Okay, good. 7 columns. नहीं, एक ही पेज में बैठेगा फिर भी. There are 7 columns. पहले मैं ड्रॉ करता हूं, वो आप देखो. ओके, और बाद में आपको जो है ड्रॉ करना है. ओके,
Look here, you are requested to draw the table like this. Okay, all students are requested to write the table or prepare a table like this. The first column is serial number, second column is transactions. Transactions means actually dealing between two or more person, that is called as a transactions. Assets, मैंने यहाँ पे R लिखा है, मतलब रुपीस का साइन किया है. ओके, व्हाट इज इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी क्या है? यश, प्लीज टेल मी व्हाट इज इंडियन करेंसी? रुपीज. बट व्हाट इज रुपीस? रुपीस का है? रुपीस का है? व्हाट इज रुपीस? रुपीस क्या है? क्या है रुपीस? Look here. Everybody please see this. Sir, can I answer? हाँ, एक नंबर. रुपीस इज करेक्ट आंसर, नो डाउट, बट लुक एट दिस प्लीज केयरफुली. इसे बघा, आपने ये मेरे पास 500 रुपए का नोट है ना? अगर यहाँ पे आपने ब्रैकेट में देख लिया, एक छोटे अक्षरों में लिखा है, ओके, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500. आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 टू द बेरर ऑफ दिस करेंसी नोट. मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. सो इंडियन करेंसी इज बेसिकली प्रॉमिसरी नोट. ओके, यश कळलं का? कसं लक्षात ठेवायचं? इंडियन करेंसी हे रुपीज आहे, अगदी बरोबर आहे, पण त्याच्या पुढे काय म्हणलं पाहिजे? उसके आगे क्या बोलना चाहिए आपको? इंडियन करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी प्रॉमिसरी नोट है. वो इट इज अ प्रॉमिस गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस दिया है. ओके, so it is a sign. Asset is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. Okay, now we are going to solve, okay, the problem from the textbook. मतलब टेक्स्ट बुक का मैं आपको पेज बताता हूं. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज पेज नंबर 34. पेज नंबर 34 from your textbook, page number 34. If you don't have textbook, no problem. Okay, I will be writing the transactions there. Show the accounting equation for the following transactions. Okay, it is given for Rohit Sharma. Rohit Sharma. So you should write here accounting equations. Equation of रोहित शर्मा. इस तरह के टाइटल दे दो. गिव द टाइटल इन दिस वे. Okay, are you ready to write with me? I am requesting you all to write with me. मतलब समझ के ले लो और मेरे साथ लिखो. हम लोग इस तरह से 2-3 सम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, आर यू रेडी? मतलब आपका ये ड्रॉ करके हो गया पूरा? इज इट रेडी? शैल वी गो हेड? चलो. ओके, सो ट्रांजेक्शन नंबर 1. रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. रोहित शर्मा started business with cash. Business with cash rupees 50,000. Okay, तो रोहित शर्मा ने अपना बिजनेस चालू किया with 50,000. Now here there are two aspects. One is the cash. एक क्या है? कैश है, जो क्या है हमारा एसेट है, और दूसरा क्या है? कैपिटल. बिकॉज व्हेन रोहित शर्मा इज स्टार्टिंग विद द बिजनेस, इट इज हिज कैपिटल. वो उसका कैपिटल है. ओके, ज्याला भांडवल असं म्हणतात, भांडवल, कैपिटल. ओके, तो लिखना कहाँ पे है? अमाउंट लिखना है, ओनली अमाउंट 50,000. एसेट में लिखो एंड राइट इन कैपिटल ऑल्सो. What to write in the liability? 0, 0, 0, 0. एक अंडरलाइन करो
and now you write again below 50,000 is equal to 0 plus 50,000. Okay, number 2. So business started with cash. कौन से column में आ गया? It is coming in the column of asset because it is a cash. It is also coming in the column of capital because that is a capital, because amount is invested in the business. So that is becoming your capital. Number 2, purchase goods from Dhoni on credit. Okay. Purchased goods from Dhoni on credit. Rupees 10,000. 10,000. Okay. Here there are two things which are very important. One is a goods and other is a purchased on credit, and Dhoni is becoming our supplier or creditor. Okay. Can anybody tell me answer? Saloni, can you tell me the answer how to write? मतलब मैं कौन से column में लिखूं? Saloni, can you tell me which column I should write? In assets, 10,000. And in liabilities, 10,000. Correct है. In asset 10,000 because of goods. Goods हमारा asset है. Asset में 10,000. लेकिन अभी यहाँ पे एक साइन करो प्लस. Because increase in the asset. Increase asset comes in ना. Goods comes in. और यहाँ पे liabilities में लिखो 10,000. यहाँ भी प्लस. कैपिटल में आएगा 0. कैपिटल में आएगा 0. 60,000 is equal to 10,000 plus 10,000. Okay. And give the यहाँ पे लिखना है आपको new equation. The second से आगे लिखना है new equation. This is our new equation. So 60,000 is equal to 10,000 plus 50,000. 60,000 कैसे आ गया? The liabilities are 10,000. Your capital is already 50,000. So 50 plus 10 it is becoming 60,000. Now number 3. Sold goods to Virat on credit. Okay. So goods are sold to Virat on credit. Okay. Monica, can you tell me the answer for this? Sold goods to Virat on credit. Sold goods. Okay. To Virat on the credit. Amount कितना आ गया? 20,000. 20,000 in assets. हाँ, asset में आएगा. Asset में क्यों आएगा? Because of और वापिस asset में ही आएगा because of debtors. Because we are selling the goods to Virat को हमने goods sell किया है. The goods are sold to Virat. Okay. On credit. So Virat is our debtor. Virat हमारा debtor है. लेकिन मुझे बताओ, मुझे asset के column में क्या क्या करना है बताओ. पहले क्या करूँ बताओ. क्या करूँ? 20,000 minus sign. हाँ, 20,000 less क्यों होने वाला है? Because goods are sold. Goods 20,000 add भी क्यों होने वाला है? Because Virat is our debtor from whom amount is receivable. मतलब ये हमारा एक asset कम हो गया, लेकिन एक asset बढ़ गया. Decrease in one asset, decrease in one asset, and increase in one asset. Okay. Here you write minus and plus 20,000. Liability आएगा 0, capital में भी आएगा 0. New equation is the 60
minus 20 plus 20, it is 60,000 again, is equal to 10,000 plus 50,000. Now number 4. चार नंबर देखो. Received a dividend. Dividend हमारा income है. Dividend is our income. Received a dividend, okay, of rupees 500. 500 का dividend मिल गया. So मम्मा त्यांनी मला विचारलेलं received a dividend rupees 500. Okay. By the way, dividend is our income. Dividend हमारा income है. Okay. And received dividend, that means actually we are getting the cash or bank. मतलब या तो cash मिलेगा या तो बैंक में जमा होगा. Normally, dividend is getting credited to our bank account. हमारे bank account में जमा होता है dividend. Because companies are never paying you cash. Companies are never paying you any cash. They are transferring the money to your bank account. Okay. तो अब मुझे बताओ ये कौन से कॉलम में आएगा और क्यों आएगा? आदित्य बताओ कौन से कॉलम में आने वाला है? Assets and capital. Yes, asset में क्यों आएगा? Because that is increase in the asset. So add in asset. Okay. और कैपिटल में क्यों आएगा? Because that is our income. ये हमारा क्या है? Income है. This is our income. So you are supposed to record in the capital also. और दोनों में भी add होगा. This is your new equation now. New equation. 60,500 is equal to 10,000 plus 50,500. Number 5. 5 नंबर की तरफ देखो. Paid for advertisement. By the way, these are expenses. Okay. And now, can you tell me? I am asking to the old students. मतलब जो पहले से आते हैं उनको पूछ रहा हूँ. New students, I am going to ask questions from the next problem. Okay. Can I get the answer from Ninad? Ninad Rajput. Can you tell me? Paid for advertisement. Okay. ये कहाँ पे आएगा? क्यों आएगा? Paid for advertisement. सर एसेट में आएगा. करेक्ट है. कैपिटल में आएगा. और कैपिटल में भी आएगा. करेक्ट है, कैपिटल में भी आएगा. बट माइनस होगा दोनों क्योंकि वो एक्सपेंसेस. यहाँ पे मुझे माइनस क्यों करना है भाई? क्योंकि वो एक्सपेंस है. Because these are our expenses. मतलब ये हमारा expenses है. Cash goes out. Cash हमारा goes out है. Cash goes out. So actually we are first of all going to subtract. Asset में से minus करेंगे. Liabilities में कुछ नहीं आएगा और capital में भी minus होगा because these are expenses. Okay. Due to expenses and losses, our capital is reducing. Due to incomes, gains and profits, our capital is increasing. Okay, very important. So what is the new equation? Rather, final equation क्या आने वाला है? New equation is 60,000 is equal to 10,000 plus 50,000. Okay. So that is the final answer, final equation you are getting. Okay. इसको खत्म करो so that we can proceed with the next sum immediately. तुमचं सगळ्यांचं लिहून झालं की मला सांगा. आमचं झालं. You can tell me that we have finished. हम कर चुके हैं. And prepare for the same table for the next sum. ऐसा एक टेबल बना दो नेक्स्ट सम के लिए.